equal. So let's b equal to b1 square plus b2 square. We also write b2 b1, so 2b1 square. So resultant magnetic field B equal to root 2 b1, and now put the value of b1. So we will get B equal to root 2 mu naught I r square upon 2 r square plus x square to the power 3 by 2. Okay. Now if r is less than x, that means the radius of the coil is very small as compared to the distance between the coil. So if r is less than x, so this r equal to 0, so x square to the power 3 by 2, so 2 से 2 cancel out. So here only x cube, so b equal to now here we get root 2 mu naught I r square 2x cube. Now if we know that mu naught upon 4 pi equal to 10 to the power minus 7, we can also, if we multiply it by 2 pi numerator and denominator, so we will get mu naught upon 4 pi 2 root 2 I pi r square upon x cube. Okay, so b equal to mu naught upon 4 pi two root 2 I pi r square upon x cube. Now pi r square means area of coil, so we can also write here mu naught upon 4 pi 2 root 2 2 I a. B equal to mu naught upon 4 pi 2 root 2 I a upon x cube. So this is the resultant magnetic field. Now the direction. So here for direction, tan theta equal to b2 upon b1, and we know b1 and b2 are equal, so it is 1. So theta equal to tan inverse 1. That means theta equal to 45 degree. So B directed at an angle of pi by 4 with the direction of the magnetic field B1. Now students, we will take one more questions. Here two identical coils P and Q, each of radius R, are lying in a perpendicular plane such that they have common centers. So find the magnitude and the direction of the magnetic field at the common center of the two coils if they carry currents equal to I and root 3I respectively. Okay, so here this is the diagram and this is the net diagram. For first coil P, current I, and for second coil Q, current root 3I. So for P, this is the direction of magnetic field, and for Q, this is the direction of magnetic field. So here BP and BQ are also perpendicular to each other. So the resultant B equal to again root B1 square plus root BQ square. Okay, so resultant B equal to root BP square plus BQ square. Okay, we have to apply the same formula, but here we have to find the magnetic field at the center of current carrying circular coil. So here x equal to 0. Okay, in last questions हमने जहाँ वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सेम, बट वहाँ पर x एक्सिस पे डिस्टेंस था, दैट मीन द पॉइंट कहाँ लाई करा था, उसके एक्सिस पे, तो डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर हो, बट यहाँ पर पॉइंट कहाँ, उसके सेंटर पर ही है, तो उस x की वैल्यू क्या हो गई 0. सो हियर BP इक्वल टू so here we will BP equal to mu naught I upon 2
r. Okay, and BQ same radius, but here current, because both the coils are having same radius but current are different, so BQ equal to here mu naught, and in place of I we have to write root 3I, क्योंकि यहाँ पे करंट हमें रूट 3I गिवन है एंड रेडियस सेम है, सो इट इज अगेन 2R. ओके, सो BP vertically upwards direction and BQ in horizontal direction. Okay, now the resultant there B equal to BP square plus BQ square. Okay, so first BP mu naught I upon 2R square and BQ mu naught root 3I upon 2R square. Okay, so square, so what will be common? Mu naught I upon 2R, this term. Okay, ये कॉमन आ जाएगी आपकी. सो क्या बच रहा है यहाँ पर? म्यू नॉट आई अपॉन 2R कंप्लीटली कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर. सो 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ रूट 3 3, सो 1 प्लस 3. सो ये देखो B इक्वल टू म्यू नॉट I upon 2R and here 1 plus 3, that is 4, और 4 का स्क्वायर रूट 2, so 2 से 2 कैंसिल आउट. सो B इक्वल टू mu naught I upon R. So this is the resultant magnetic field, and the direction tan theta again B2 upon B1, BP upon BQ. So here 1 upon root 3 and 10 में root 3 1 by root 3 30 degree और pi by 6. Now student, one more question. A metallic wire is bent into the shape shown in the figure and carries current I. If O is the common center of all the three circular arcs of radius R, 2R and 3R. So find the magnetic field at point O. This is the answer. Okay, so for here only this point, the radius R, then again it will be 2R, and for here 3R. So हमने एक फार्मूला लिखा था थीटा के फॉर्म में ही, जब आपको थीटा ओनली गिवन हो. सो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई थीटा अपॉन आर. ओके, आई आर. सो थीटा फॉर फर्स्ट एंगल, सभी पॉइंट्स के लिए, सभी कॉइल्स के लिए इन दिस. ओके, व्हाट इज एंगल सेम है, थीटा ही है, बट करंट डायरेक्शन सब में चेंज हो रही है. तो फर्स्ट व्हेन वी फाइंड B1, so mu naught I theta upon R, then B2 mu naught I theta upon, for here to here radius 2R, and then we have to find B3, so mu naught I theta upon 3R. now what will be the resultant? तो यहाँ हम करंट की डायरेक्शन देखेंगे. फर्स्ट B1 एंड B3 आर इन द सेम डायरेक्शन बट B2 इन अपोजिट डायरेक्शन. ओके, ये और ये दोनों करंट सेम डायरेक्शन बट ये अपोजिट है. सो B इक्वल टू B1 माइनस B2 प्लस B3. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ऑल द थिंग्स. सो म्यू नॉट आई थीटा अपॉन आर सभी में कॉमन है. म्यू नॉट आई थीटा अपॉन आर. सो यहाँ पर बच रही वैल्यू 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3, 1 प्लस 2 माइनस है. ओके, सो हियर 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3. अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे. एलसीएम हो जाएगा आपका 6. सो हियर 6 माइनस 3 प्लस 2, हाउ मच?
6, okay, here 6, here 3, so 6 minus 3 2, sorry 6 minus 3 2, and 6 minus 3 3, and then here again 2, so 3 plus 2 5. So this whole thing b equal to mu naught b equal to how much? 5 mu naught I theta upon r. Okay, now student, try to solve these questions. Okay, here only the values of current changes. Okay.